अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एच डी मैथ ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम स्टैंड टेंसर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के एंड में कमेंट्स करना ना भूलें। अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से ये समझेंगे कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर u के कंपोनेंट्स गिवन हो तो कैसे हम स्टैंड टेंसर मालूम करेंगे। क्वेश्चन ये है कि determine the strand tensor if the displacement components are u1 equal to 2x1 x squared 2, u2 equal to 2x1 2x3, u3 equal to x3 square minus x1 x2। हमें स्टैंड डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से पता है कि एप्सिलॉन जे के इक्वल टू 1/2 इंटू यू जे कोमा के प्लस यू के कोमा जे के इक्वल है। नाउ अब हमें स्टैंड टेंसर फाइंड करना है, मतलब एप्सिलॉन जे के इक्वल टू एप्सिलॉन 11, एप्सिलॉन 12, एप्सिलॉन 13, एप्सिलॉन 21, एप्सिलॉन 22, एप्सिलॉन 23, एप्सिलॉन 31, एप्सिलॉन 32, एप्सिलॉन 33 फाइंड करना है। फर्स्ट वी विल फाइंड एप्सिलॉन 11। इसके लिए हम j इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो वी विल गेट दिस एप्सिलॉन 11 इक्वल टू 1/2 u1, 1 प्लस u1, 1 equal to 1/2 into 2 u1, 1 cancel 2, then we will get u1, 1. It means that epsilon 11 equal to u1, 1 which is equal to partial u1 over partial x1. Put u1, we will get this. Taking partial differential with respect to s1, we will get this 2x2 square. So epsilon 11 equal to 2x2 square. Similarly, we will find epsilon 12. So we put j equal to 1, k equal to 2, we will get this epsilon 12 equal to 1/2 into u1, 2 plus u2, 1 equal to 1/2 into partial u1 over partial x2 plus partial u2 over partial x1. Put u1 and u2, we will get this. Now taking partial derivative with respect to x2 and x1, we will get this epsilon 12 equal to 1/2 into 4x1 x2 plus 2x3 which is equal to epsilon 12 equal to 2x1 x2 plus 2x3. Similarly, we will find epsilon 13, so we put j equal to 1 and k equal to 3, so we will get this epsilon 13 equal to 1/2 into u1, 3 plus u3, 1 equal to 1/2 into partial u1 over partial x3 plus partial u3 over partial x1. Putting the value of u1, u3, we will get this. Now taking partial derivative with respect to x3 and x1, we will get this 0 minus x2. After solving this, we will get this epsilon 13 equal to minus x2 over 2. Now हमें पता है कि स्टैंड टेंसर सेकंड ऑर्डर सिमेट्रिक टेंसर है, so epsilon jk equal to epsilon kj. u epsilon 21 equal to 2x1 x2 plus x3 because epsilon 21 equal to epsilon 12. इसी तरह से epsilon 13 equal to epsilon 31, so epsilon 31 equal to minus x2 over 2. Similarly, we will find the value of epsilon 22, so we put j equal to 2 and k equal to 2. We will get epsilon 22 equal to 1/2 into u2, 2 plus u2, 2 which is equal to 1/2 into 2 u2, 2. Cancel term 2, then epsilon 22 equal to u2, 2. It means that epsilon 22 equal to u2, 2 equal to partial u2 over partial x2. Putting the value of u2, we will get this. Now taking partial derivative with respect to s2, we will get 0. So epsilon 22 equal to 0. Similarly, we will find epsilon 23, so we put j equal to 2, k equal to 3, we will get this epsilon 23 equal to 1/2 into u2, 3 plus u3, 2 equal to 1/2 into partial u2 over partial x3 plus partial u3 over partial x2. Putting the value of u2 and u3, we will get this. Now taking partial derivative with respect to s3 and x2, we will get this. After solving this, we will get this epsilon 23 equal to x1 over 2. Now using the symmetric tensor condition, epsilon jk equal to epsilon kj, so epsilon 23 equal to 32 which is equal to epsilon 32 equal to x1 over 2. Similarly, we will find the value of epsilon 33 which is equal to epsilon 2x3.
Now substituting these values in strength tensor, so we will get this. Strength tensor epsilon jk equal to 2x2 square 2x1 x2 plus x3 minus x2 over 2 2x1 x2 plus x3 0 x1 over 2 minus x2 over 2 x1 over 2 2x3। यूँ हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंपोनेंट की मदद से स्ट्रेंथ टेंसर फाइंड कर सकते हैं।